integrated approach out there. We have with us Mr. Bhattacharya still with us in the studio. Mr. Bhattacharya, sort of a quick, smooth transition which we see in terms of what, as you know, we heard both Brazilian President and Prime Minister Modi there as well, and the way we've seen the kind of issues which have been taken up throughout the seemingly the same thread being carried forward by Brazil. Well, you've seen that the emerging countries have had a very similar voice. I think one of the strongest points that came out of this summit was the voice of the Global South. India championed its cause very effectively and was its leading voice throughout the process. It's very, very heartening that Brazil has taken on the mantle. Brazil is a very old friend of ours. We have collaborated on a range of issues, and I remain confident that with Brazil, the G20 movement will continue to flourish for the betterment of humanity. Okay, fair enough. But when we're talking about, Mr. Bhattacharya, the themes, which Brazilian president was referring to, the theme for their presidency will be building a fair world. The theme for India's presidency was one world, one family, and one future. Again, we see the kind of coherence which is there between the developing economies, the developing nations out there. And as Preeti was also referring to earlier, previous presidency was with Indonesia, their theme as well, Indian presidency of G20 and Brazil's presidency as well. And I think we will see this continue when South Africa takes over, yes. The leadership the following year. Because these are four very leading major emerging economies, not just leading major economies, but also with a consciousness towards the commitment to the rest of our community. So this is obviously a step in the right direction. I'm extremely optimistic. As you know, the Troika, which works with the past, the present, and the future presidency, works on these agendas together as well. So it is no surprise that we see this great continuity. And I have great confidence in the future. Okay. Prime Minister himself mentioned that this should be an era for hope. And I think he quoted one of the shlokas in that context. And today we are coming out of the crisis of confidence that came about through the pandemic. So we are in another crisis situation, and India has shown the light towards a more optimistic future. बिल्कुल, और तीन और खास मेहमान हैं जो इस समय हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि डीजी हैं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। साथ ही आशीष खन्ना हमारे साथ हैं, सीईओ प्रेसिडेंट रिन्यूएबल्स टाटा पावर, और इसके अलावा मैक्सिम कुज़नेत्सोव, चेयरमैन रशियन एशियन बिजनेस काउंसिल। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सचिन चतुर्वेदी, पहले मैं आप ही का रिमार्क चाहूँगी, जिस तरह से अब ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंप दी गई है और नवंबर के आखिर तक हमारे पास अध्यक्षता अभी रहनी है, और जैसा अभी संजय भट्टाचार्य जी भी कह रहे थे कि ये एरा ऑफ होप है, एक तरह से एरा फॉर होप। क्या आप भी मान रहे हैं एक तरह से भारत की अध्यक्षता के साथ और ज़्यादा मुखर होकर शुरू हुआ है? जिस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अब हम ब्राज़ील को देखेंगे, और जैसा बात हो रही है कि इसके बाद जो आगे है अध्यक्षता, उसमें भी कहीं ना कहीं ये सिलसिला जारी रहने वाला है। आपको लग रहा है क्या कि भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान एक ऐसा मार्ग छोड़ा है, एक ऐसी आशा छोड़ी है, एक ऐसी राह तमाम देशों को दिखाई है जिसमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात है? बिल्कुल सही कह रही हैं प्रीति जी आप। और जैसा एम्बेसडर भट्टाचार्य ने कहा, दो बातें हमें समझनी होगी। प्रेसिडेंट लूला जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस सामाजिक सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो समाज में समानता लाने की बात करता है। भारत में लगातार प्रधानमंत्री 2014 से सबका साथ सबका विकास इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, विश्व को एक परिवार बना के सबके साझा भविष्य की चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि जिस फेयर वर्ल्ड की, जिस सोशल इंक्लूजन की चर्चा प्रेसिडेंट लूला ने अपने भाषण में अभी करी, वो पृथक होगा। जैसा हमने भारत में कहा कि सभी को फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जो डेक्कन प्रिंसिपल्स हम लेकर के आए हैं हमारे एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप में, एग्जैक्टली प्रेसिडेंट लूला ने वही कहा कि टू फाइट अगेंस्ट हंगर, ये हमारा एक मेजर सोच होगा। एनर्जी ट्रांजिशन, जहां ब्राजील का बोलबाला रहा है, बायोफ्यूल अलायंस में हमारे साथ जुड़ करके उन्होंने फिर उस बात को सामने रखा है। सस्टेनेबिलिटी उनका भी एक प्रमुख मुद्दा है, और हमने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में
और जोर लगा के, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मिड पॉइंट पे आ चुके हैं, 2030 का एजेंडा हमसे मिस नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जहां हम देख रहे हैं कि भारत और ब्राजील का एजेंडा बहुत फर्क नहीं होगा। आर्टिकुलेशन, उसका एनफोर्समेंट ऑलमोस्ट वैसा ही होगा जैसा एम्बेसडर भट्टाचार्य कह रहे थे कि हमारे बाद में ब्राजील आया है और ब्राजील के बाद साउथ अफ्रीका। साजन जी, ये इसका है कितना बड़ा चैलेंज जी? आप विषय ये भी है। एसडीजी की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा गया कि जो ग्लोबल प्रोग्रेस है वो ऑफ ट्रैक हो गई है एसडीजी से। सिर्फ 12% ऐसे टारगेट हैं जो ऑन ट्रैक हैं। ये चैलेंज कितना बड़ा है और वापस इस पर दुनिया को लाना एक तरह से कितना बड़ा चैलेंज या चुनौती के रूप में देखा जाए? देखिए, उसके लिए जैसा भारत में बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है, विकास का स्थानीयकरण अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोगों द्वारा, कुछ देशों द्वारा ऐसी विकास की योजनाएं शुरू की गई जिसने दूसरे देशों को या तो कर्जे की आग में ढकेल दिया या रिसोर्सेस को उनसे ले लिया। ये वापस उनके पास जाए, हम विश्व व्यवस्था में भी फेयरनेस लेके आ सकें, विश्व व्यवस्था में भी उन तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति, जो संसाधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति है, उसके प्रति हम उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर पाए, तभी हम एसडीजी अचीव कर पाएंगे। Okay, fair enough. We'll come back to you, Mr. Chaturvedi, and there are various aspects of this transition from the Indian presidency to Brazilian presidency as well. But one aspect which you mentioned, that is the focus on energy resilience and, talking about clean energy as well, various aspects of that. Mr. Ashish Khanna is with us. He is CEO and President Renewables of Tata Power. Mr. Khanna, when we're talking about energy issues and the challenges there in renewable energy specifically, we've seen, in this G20 leaders summit under India's presidency, the world leaders agreed to the fact and promised rather that they'll triple the renewable energy capacity, and the net zero targets, global targets have also been fixed by 2050 as well. One, how realistic that is, and two, in terms of when we look at, or rather, when we heard Brazilian president also for the next year, the kind of agenda which is being set by the developing economies, how significant do you think the movements will be and the actions will be from these developing countries, and what is expected from the developed economies? You see, there are few aspects to it. One is the number, which is, we are talking about 3x renewable energy capacity by 2030. I think more importantly is direction where we are moving on in this energy transition. And if you look at the overall declaration, not only the statements, there is so much which has been said about and written about on what all is required and what all will be done. We have also reiterated that global warming will be limited by 1.5 degrees Celsius. And the work will happen on it. G20 itself contributes around 80% of the total greenhouse gas emissions. So if there is a commitment to enhance the renewable energy for this transmission, for this energy transition, I think it's a very serious thing. India itself has already declared that by 2030, we will be having 500 gigawatt of renewable energy, which is virtually 3 times of where we are at this moment. So I think it is realistic if you work towards it. Yes, it's a big challenge in the next 7 years. From where we have progressed, from 50 to 150, it is easy, but from 150 to 500, it is not that easy if you look at the multiplication factor on it. Okay. But I think it is the right direction, and it is not only talking about energy transition and renewable energy. There is also hydrogen from zero emission or low emissions, which has been talked about, and there are commitment towards it. Global Biofuel Alliance, which has been spoken about, and their commitment towards it. I think there is a lot which is being said and being promised. Yes, it requires funding. Yes, it requires commitment. But then there is a great opportunity, and this is the time for us to do it. Okay. But Mr. Khanna, where you left, and something which Brazilian president also very emphatically stated in his, remarks at the end of this summit is, as you're pointing out, it cannot be just merely announcements, policy announcements or decisions to, find solutions as well.
allocation of adequate resources, and this allocation of adequate resources is very important for the energy sector, for the renewable energy sector as well. No, I agree. I think it requires $1 trillion, not less. So we are not in the era of $1 billion now. We are in the era of $1 trillion now. But I think it's again, you have to look at it that if you have to do energy transition, all of it is required. There is a need, and at the end of the day, there is a business too. It's not that it is going for gratis. Energy is required. Developing countries need energies. And for their development, if we take the renewable path, I think it's going to help the world very largely. You have to appreciate the fact that while we are talking about 1.5 degrees Celsius, the world average has already increased by 1.1 degrees by some studies. So there is very little play which we have. And unless we take actions now, we might be too late. Okay. We'll come back to you, Mr. Khanna, but Mr. Maxim Kuznetsov is also with us. Mr. Kuznetsov, when we look at the kind of transition which is happening from one G20 presidency to the other, and as our panelists were also pointing out earlier, from Indonesia to India and now Brazil, and thereon moving onwards to South Africa a year later. All developing economies, the focus clearly is that there should be a level playing field, one, and two, everybody, including the developed economies, will have to walk the talk. Yeah, sure. The key event of this summit is the inclusion of African Union in G20 group. It is a huge success for Indian host, and we hope that the sound of global south will be louder, because just 10 years ago the voice of G20 sounds like as voice of G7, but now there are two different voices, and we hope that developing countries will provide more independent policy in the future and will decrease the role of dollar as a key currency in the world, and will develop alternative financial infrastructure and alternative system of security. बिल्कुल, और एक बार फिर इस चर्चा के बीच हम भारत मंडपम रुक करेंगे, जो कि G20 का वेन्यू है, और वहाँ हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं: पवन कुमार शर्मा, अमरेंद्र गुप्ता, शालिनी खंडेलवाल और मनोज वर्मा। एक बार फिर से आप चारों का शुक्रिया, लगातार अपडेट आप चारों हम तक पहुंचा रहे हैं। पवन, अभी हमने देखा कुछ ही पलों पहले जो अध्यक्षता है G20 की, अब वो ब्राजील को सौंप दी गई है, और इस अध्यक्षता के साथ ही जो तमाम ऐतिहासिक क्षण जुड़े हैं, जिनकी चर्चा आप पहले भी कर रहे थे, वो भी साथ हैं। अब G20 G21 होगा। अब जो अफ्रीकी देश हैं उनकी भी आवाज़ मुखर होगी जब ब्राज़ील में बात होगी। तो जो बड़ी बातें निकल कर आई, उन सब के बीच ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो केयर दिखाई गई भारत की तरफ से, उसे भी वो याद करके लेकर जाएंगे। फिलहाल आप क्या बताएंगे इसके बारे में वहाँ से? प्रीति, जो G20 समिट है उसका जो है औपचारिक समापन हो गया है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन पे सबको धन्यवाद दिया और सबके पूरे विश्व की स्वस्थ कल्याण की उन्होंने कामना की अंत में। और जैसा हमने कहा, क्योंकि अब जो है G20 की अध्यक्षता जो है वो ब्राज़ील को सौंप दी गई है। हालांकि 30 नवंबर तक भारत के पास ये अध्यक्षता अभी भी है, 2.5 महीने के करीब अभी समय है। तो ये इसको भी इंगित किया प्रधानमंत्री ने, और ये बात भी उन्होंने दोहराई कि इस बार हम वर्चुअल मीटिंग भी कर सकते हैं, कि जो हमने यहाँ पे जो भी सजेशंस आए हैं उनको अगले 2.5 महीने में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने वहाँ पे बात कही। जो इस दौरान क्या है, एक और बात भी प्रीति हुई है कि जो तीसरा सेशन चल रहा था वन फ्यूचर का, उसी के अंत में जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उस पर भी औपचारिक मोहर जो सदस्य देश लगाते हैं, या जो भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, वो औपचारिक मोहर भी उसको
उसके ऊपर न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन पर लग गई है। तो ये चीज़ें अब देखना होगा कि थोड़ी देर में संभावना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसमें क्या क्या आउटकम्स का हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि डेक्लेरेशन तो सबके सामने है ही हमारे सामने। तो ये अभी होने वाला है। एक बड़ी बात जो अभी ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर भी की, उनका जोश भी हमें दिखा। उन्होंने जो बड़ी बात कही कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। भारत को भी उसमें शामिल करने की बात लगातार वर्षों से होती रही है। ये बात ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने दोहराई है बहुत, क्योंकि G20 बड़ा इकोनॉमिक फोरम है। उस फोरम पे अगले जो अध्यक्ष है, अगर वो उनके राष्ट्रपति जो है वो ऐसा कहते हैं तो फिर उन्होंने मांग दोहराई है। उसके साथ ही उन्होंने एक बात और भी कही है कि वर्ल्ड बैंक में भी जो हिस्सेदारी है विकासशील देशों की, वो जो है वो बढ़ाई जाए, ये भी उन्होंने बात उसमें कही है। तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि जो कर्ज है विकासशील देशों में, क्योंकि चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के देश हो, अफ्रीकन यूनियन हो, जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर कर्ज बहुत है, तो उसको लेकर भी उन्होंने वर्ल्ड बैंक से मांग भी की है और ये फोरम पे भी उठाया है कि उनकी सुध ली जाए जो विकासशील देश हैं। अगर वो भुखमरी से भी लड़ रहे हैं, कई देशों की स्थिति ऐसी है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। तो चिंता उन्होंने जाहिर करी है विकासशील देशों के प्रति। उसमें उनकी जो वहाँ का भ्रष्टाचार है, चाहे वहाँ के रिसोर्सेज की बात है, चाहे वहाँ के एनर्जी की बात है, चाहे उनके कर्ज की बात है, तो चारों बातों पर उन्होंने कहा है जो कि ये इस पे को भी G20 के फोरम को उसको एड्रेस करना होगा। तो नए अध्यक्षता फिलहाल सौंप दी गई है, पर फिलहाल भारत ही अध्यक्ष है और बहुत सफल आयोजन रहा है। प्रीति, जहाँ तक बात है, पहले ही दिन जो सेकंड सेशन में ही डेक्लेरेशन पे सहमति बन जाना, जो बाली में नहीं हुआ था वो हो जाना, और इसमें जो वर्ड टू वर्ड पे सर्वसम्मति है, जो भी प्रस्ताव आए हैं उस पे सभी देशों की जो है वो सहमति है, चाहे सदस्य देश हो, और अब तो अफ्रीकन यूनियन भी परमानेंट बन गया है, उसके बाद चाहे इन्वाइटी देश हो 9, चाहे 14 जो विश्व के जो संगठन है बड़े बड़े, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र भी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, कि बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक है, WHO है, सारे के सारे जो चीज़ें हैं उन सब ने भी इसके ऊपर जो है सर्वसम्मति प्रदान की है। तो बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल, और ये तमाम प्रयासों के बीच जब इसे काफी मुश्किल माना जा रहा था, ऐसे में पहले ही दिन सर्वसम्मति बनना अपने आप में जाहिर तौर पर बड़ी बात है। सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी, जो बड़ी बातें हैं और जो ब्राजील के राष्ट्रपति ने कही, हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, उसमें यूएनएससी रिफॉर्म की जो बात है, एक रिफॉर्म की शुरुआत तो कहीं ना कहीं भारत ने अपने अध्यक्षता के दौरान कर ही दी कि G20 को G21 बना दिया, अफ्रीकन यूनियन है उसे शामिल कर लिया। अब जो रिफॉर्म्स को लेकर बात है, वो आप इस मंच के बाद आगे कितना और पुरजोर तरीके से उठते देख रहे हैं? क्योंकि भारत लगातार हर मंच पर यह कहता रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन्हें आज के समय के हिसाब से अपने आप को ढालना ही होगा। बिल्कुल ठीक है प्रीति जी, और अगर आप देखें समय ने जो करवट ली है उसमें हम देख रहे हैं कि जो G7 की अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें कैसे गिरावट आई है, ग्लोबल साउथ का कैसे राइज हो रहा है और किस ढंग से हम आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। ये जो प्रगति दक्षिण देशों में हो रही है, दक्षिणीय क्षेत्रों में हो रही है, जो उन लोगों का सहयोग आगे बढ़ रहा है, जो उन लोगों की भूमिका आगे आ रही है, उसमें इप्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तीनों देशों की महत्वपूर्ण आवाज का महत्वपूर्ण स्थान है। और इसलिए चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे विश्व बैंक में जो हिस्सेदारी हो, जो IMF के SDR का एलोकेशन है, ये सारे मुद्दे उसमें समाहित हैं, वो उसमें जुड़े हुए हैं, वो इसका हिस्सा हैं। तो विश्व का प्रबंधन, विश्व का गवर्नेंस जो है, नई व्यवस्थाओं में, विश्व में एनर्जी, और जैसे हमारे रशियन मित्र कह रहे थे कि डी-डॉलराइजेशन की चर्चा हो, स्थानीय करेंसीज में व्यापार हो, तो कई तरह के मुद्दे अब समय के हिसाब से परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। भारत की जो सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है, जो हमारा आर्थिक विकास है, वो समय के अनुरूप इसको बदलने में सहायक सिद्ध होगा, और इसलिए हमारा लगातार आर्थिक विकास करना अब और भी ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए भी और विश्व के आर्थिक विकास के लिए भी। Mr. Chaturvedi, taking the legacy forward, which India has established in this G20 Leaders Summit and this year of its presidency of G20, that seemingly is pretty much clear. If we look at,
various aspects which Brazilian president said or raised in his speech, and you're referring to some of them in terms of global government institutions reform as well, and also social inclusion, but inequality of various aspects. And Brazilian president didn't mince the words there, clearly pointing out that these inequalities needs to be addressed, of income, of health, food, gender, race, and representation. Clearly, these are the aspects where India has also been focused upon in its approach on the global stage, that these are the challenges which, unless addressed, the world will not be able to find solutions to the wider issues it faces. Absolutely right, Vishalji. If you recall, in his first tenure as president of Brazil, President Lula had introduced one very popular program called Bolsa Familia. And Bolsa Familia provided fillip to this idea of inclusion, which actually motivated all the IPSA countries and other developing countries. India's own program, Chandan, derives that our innovation is to add biometric identity to it, and that's why Janadhar became such a big and such a prominent program within Global South. So Bolsa Familia is something with which President Lula's first tenure got recognized. In the second tenure, he further deepened to bridge the inequality gap in Brazil. And now it comes again from him as he takes over as the next presidency for G20. I am not at all surprised, because that has been his a push all through, not only in his own country, but in the LATAM region. And that's where he has been holding this. I think this is one major challenge for whole of Global South. So I think it's very appropriate, very timely, and with inclusion of G20 to have AU becoming G21, I think it's all the more timely, because the way development designing has happened with the last 20 years of the neoliberal framework, inequalities have crept in our system. They have to be adequately addressed. Development has to be all-encompassing, and that's where I think President Lula comes in. Okay. Mr. Khanna, we've been talking about how energy security is a very, very significant and important aspect for the countries world over, and every country is trying to find solutions in its own way. India has taken the lead as far as renewable energy aspect is concerned. International Solar Alliance, now the Global Biofuel Alliance as well, with the president of the next G20, that is Brazilian president, in his speech clearly mentioning, a short speech, but one very clear aspect is the focus on energy transition. Now, that seemingly is very significant. How do you see the movement from here onwards, and the kind of expectations which are there from the global leadership to find solutions to these energy challenges? No, I think it is very important as well as critical that now we need to see how the words translate into actions. India has taken the lead, and there has been phenomenal increase in as well as the renewable energy deployment is concerned. But then we also have to look into the aspect that developing countries' energy transition will not be as same as the developed countries' energy transition. And then we need to carry that balance in between. I think funding is one aspect. Technology is another aspect. We need different types of renewable energies. Distributed energy is what we need. Cross-border transmission of energy is also very critical. So I think there are possibilities, there are options available, but we have to keep on investing into technology, because that will play a very important role in how we progress into energy transition. And it's not only renewables, we are also looking for small nuclear reactors for civil use. Hydrogen is going to be replacing the other types of fuels in future. So I think we are at that cusp where this potential which is available with us, and for that matter, countries like India is also fortunate, and so is many African countries, to have this abundance of sun and wind with us, which can be harnessed for this renewable energy and can even be exported out. So I think we are looking at this energy transition in a very positive manner, if you ask me. We have to keep on investing in it.
It will also generate a lot of employment, as you see. We also have to ring fence it from a standpoint that, like, India has now incentivized manufacturing within the country. And I think that sort of investments, plus investments in technologies and R&D, will go a long way in this energy transition, especially for the developing countries. Okay. Mr. Kuznetsov, your views there on the energy transition aspect, because this is an issue which the entire world is facing, and all resources will have to be pooled in. Again, quoting Brazilian president that from his speech that just policy decisions would not be sufficient. Enough allocation of resources will have to be made, and the first challenge comes to the energy sector itself. Mr. Kuznetsov? Pardon. Yes, Mr. Kuznetsov, Energy transition is crucial. Energy transition is crucial, but we need to know that as to new Okay, looks like there seems to be some issue with the network there. We'll go back to Mr. Kuznetsov. But on the related aspect, Mr. Chaturvedi, when we are looking at or when we take a deep dive into the New Delhi Leaders Declaration and then put it in context with what the Brazilian president said vis-a-vis the focus of his country's presidency for the G20 bloc for the next year, there seems to be a lot of synergy in terms of what under India's presidency has been achieved and what the next president is talking about. One aspect which you were mentioning earlier was, of course, the inclusion, wherein, social inclusion, where the outcome document clearly focuses upon dealing with the gender inequality as well and the overall inclusivity. No, absolutely right, Vishalji, because if you see the dimensions of engagement which are there, as we know in G20, there is a troika. So Indonesia, India and Brazil, all three of us work together. We work together in terms of how dimensions of engagement emerge. So what India was deciding was not very different from what Indonesia wanted to continue and what Brazil is intending to take forward. And that's why in G20 there is this arrangement of troika. Now as India finishes, we would be part of the outgoing presidency, Brazil would be incoming, and then would be South Africa. So that's where the troika comes in. They ensure continuity of programs. Of course, the presidencies attach their own weightage behind some of the themes, but largely actions continue. They go forward. We build on several examples that came out from Indonesia of success, like, for instance, the pandemic fund, which was proposed in Indonesian presidency. It has taken a concretized shape during our discussion and our dimensions of engagement. So that's where large effort comes in, and this provides continuity. So no one would be surprised that this would get strengthened when it comes to African participation, deeper participation of the debt-ridden countries, the recapitalization of MDBs, the cryptocurrency framework. They all have been discussed. Even expansion of G20 to G21 was discussed in 4 different presidencies at 4 different times. But it has happened in Indian presidency. So times, of course, play an important role, but Troika arrangement ensures the continuity. बिल्कुल. और क्लीन, ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आशीष खन्ना जी जो आपने बड़ी बातें बताई हैं, उसमें ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो एनफ एलोकेशन है वो हो, और जो टेक्नोलॉजी की बात आपने कही है उस तक भी पहुंच सबकी हो, ये भी सुनिश्चित करना होगा. अगर हम दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात करें तो G20 के देश 83% से ज़्यादा का योगदान देते हैं, और
इनमें से जो 19 देश हैं उन्होंने नेट जीरो का लक्ष्य तय कर रखा है। मैं आपसे थोड़ा सा सफर समझना चाहूंगी, क्योंकि बाली में हमने एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप को अपनाया था, जिसमें हमने देखा था कि जो स्वच्छ ऊर्जा टेक्नोलॉजी है और ऊर्जा तक जो पहुंच है, इसके लिए जो भी फंड्स की जरूरत है, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसमें कहीं ना कहीं हम सुधार होता देखेंगे। अब तक के सफर की बात करें तमाम चैलेंजेस के मुकाबले, वो कैसा रहा है G20 समिट्स के दौरान? देखिए, आई थिंक असल में हर कंट्री कोशिश कर रहा है। देयर आर लिमिटेशंस बट एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। इफ यू लुक एट इट, आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ इंडिया इटसेल्फ। हमारी प्रोग्रेस अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी और उसके डिप्लॉयमेंट में, फिनोमिनल। इन लास्ट 5 to 7 years हमने 3 गुना ज़्यादा एनहांस किया इस एनर्जी को, और अब हमारा 500 गीगावाट का टारगेट है बाय 2030। सो आई थिंक देयर इज अ सीरियसनेस टू इट। चैलेंज ये है कि फंड की रिक्वायरमेंट है और टेक्नोलॉजी जो हमें चाहिए उसके निवेश की भी बहुत क्रिटिकलिटी है। हर कंट्री उतना नहीं बढ़ पाई जितना जैसे इंडिया ने बढ़ा। हर कंट्री के लिए कुछ अपने तकलीफ हैं और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो उनके पास हैं। आई थिंक अगर हम ये टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के पास लो कॉस्ट में कर सकें और इंडिया जैसी कंट्री सर्विसेज दे सके, अगर हम कुछ ऐसा मॉडल बना सकें इस वर्ल्ड में और उस पर चल सकें। अभी हर कंट्री अपने लिए ही कर रहा है, बट अगर सपोज एक ऐसा मॉडल बने कि इंडिया सर्विसेज कर रहा है अक्रॉस, बिकॉज आज की डेट में ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम इंडिया में बैठ के इवन ब्राजील का पावर प्लांट चला सकते हैं। एंड मैं रिन्यूएबल पावर प्लांट की ही बात कर रहा हूँ। और अगर हम ऑल्सो क्रॉस कंट्री ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर थोड़ा निवेश करें, ताकि जब एक कंट्री के पास एक्स्ट्रा पावर है वो पड़ोसी कंट्री को दे सके, और जब उनके पास जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उसको अगर हमारी कंट्री को फायदा दे सके, सो आई थिंक वी विल गो लॉन्ग वे। बट द चैलेंजेस रिमेन्स। द बिगेस्ट चैलेंज इज इन्वेस्टमेंट, एंड आई थिंक द सेकेंड चैलेंज इज स्पेंडिंग ऑन योर ओन R&D फॉर द रिन्यूएबल सेक्टर। आई थिंक स्टोरेज एक ऐसा है जिसके कारण आज की डेट में अभी भी हम 24/7 रिन्यूएबल पावर नहीं दे पा रहे, क्योंकि स्टोरेज की थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर उसके अंदर थोड़ा निवेश आए और एक टेक्नोलॉजीज आए जो काफ़ी डेवलप कंट्रीज काफ़ी काम कर रही हैं उसके ऊपर, अगर वो डेवलपिंग कंट्रीज को भी मिले एट लीस्ट कॉस्ट बेसिस, सो आई थिंक ये सब कुछ हो सकता है। इंटेंशन इज देयर, काम भी हो रहा है। वी आर जस्ट एट दैट कस्प वेयर आई फील थिंग्स विल चेंज वेरी सून। बिल्कुल। और आने वाले समय में जो ऊर्जा से जुड़ी, एनर्जी सेक्टर से जुड़ी ज़रूरतें हैं वो कई फोल्ड में, कई गुना बढ़ने वाली हैं हर देश की। ऐसे में इस दिशा में गंभीरता दिखाना बहुत ज़रूरी भी है, और जो हमें इस समय डिक्लेरेशन में दिखाई भी दी है। फिलहाल हम अभी अमरींद्र गुप्ता हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियोड से बात की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली में महाशक्तियों का महाकुंभ यानी कि G20 सम्मेलन चल रहा है। आज दूसरा दिन है और इस सम्मेलन से कई सारे बड़े टेकअवेज निकले हैं। बहुत सारे मसले हैं जिस पर बहुत सारी बातचीत हुई है, और कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक ऐसा आयोजन है जिससे आपसी समझौते के साथ मिलकर हर चुनौतियों का सामना किया जा सके, उसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस भी निकली हैं। कई मसलों पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मार्गरेट मैक्लियोड, जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं। हम सीधे बात करते हैं मार्गरेट से और समझते हैं कि भारत और यूएस के रिलेशंस के मायने क्या हैं और किस तरह के संदेश यहाँ से निकले हैं। मार्गरेट, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मार्गरेट, मैं समझना चाहूँगा कि G20 का जो ये समिट है ये कितना इम्पोर्टेंट है, और यूएस के लिहाज से भी अगर जानना चाहूँ तो आप इसे कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं?
जी, अमेरिका समझते हैं कि G20 एक ऐसा फोरम है जो दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला, दुनिया के सबसे बड़ी विकासशील उभरती हुई और विकसित देश साथ साथ बैठकर अपने नुक्ते नज़र, अपने दृष्टिकोण शेयर करके इस मसले से निमट रहे हैं। और हम इसलिए G20 2026 में खुद मेज़बानी करना चाहते हैं। अच्छा मार्गरेट, एक चीज़ और बताइए कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं पिछले दशकों से बहुत अच्छे रहे हैं, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं उनके रिश्तों में एक मजबूती देखने को मिली है। और अगर मैं बात करूं G20 समिट की, तो अगर जिस तरह से यूएस के प्रेसिडेंट का वेलकम प्रधानमंत्री जी ने किया और आज सुबह राजघाट पे भी वही गर्मजोशी दिखी, कितना इम्पोर्टेंट इस तरह का वेलकम था, और जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे आपको किस तरह के मैसेज देख रही हैं? मेरे ख्याल में कि इन व्यक्तियों बस एक इशारा है हमारे दोनों लोगों के संबंध के, क्योंकि अमेरिका और इंडिया दोनों बड़े बड़े लोकतंत्र है और हमारे मुश्तरके मफादात बहुत है और हम तावन करने के लिए बहुत मौके हैं। मार्गरेट, एक चीज़ और, भारत और अमेरिका के जिस तरह के संबंध हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों की बात की जाए तो काफ़ी सारे मुद्दों पे भारत और यूएस की एक सहभागिता बनी है। अगर हम बात करें सरफेस से लेके स्पेस तक, तो कई सारी संधियों को देखा जा सकता है। इन संधियों को आप कैसे देखती हैं, और जो रिलेशंस है भारत और यूएस का, उसे आप कैसे देख रही हैं? जी, ये संयुक्त जॉइंट स्टेटमेंट में हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, जिसमें स्पेस तो एक है, जिनमें हम कह रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया दोनों साथ साथ मैन स्पेस एक्सप्लोरेशन पे सहयोग करना चाहते हैं। कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात भी थी, लेकिन ना सिर्फ स्पेस है बल्कि बहुत सारे स्टेम फील्ड्स में हम सहयोग करना चाहते हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी काफ़ी उदाहरण थे, क्योंकि काफ़ी सारे एसोसिएशंस और पार्टनरशिप्स है जिसके तहत हमारे लैबोरेटरी से लैबोरेटरी की कोलैबोरेशन भी हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भारत जो अमेरिका के बीच में जो संधियां हैं, उसमें जो G20 में से एक मैसेज निकला है कि जो G20 के कंट्री हैं, जो विकासशील कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जिनको सहयोग की आवश्यकता है, उसको न सिर्फ भारत ने बल्कि यूएस के साथ साथ पूरे G20 की कंट्री ने कहा है कि उनको विकासशील गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सहायता की जाएगी। और जिस तरह से यूएस का अप्रोच है विकासशील कंट्रियों को आगे बढ़ाने के लिए, उसे आप कैसे देख रहे हैं? जी, कल बहुत बड़े न्यूज़ थी कि अमेरिका हमारे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जो हम PGI कहते हैं, इनके तहत एक इंडिया, पश्चिमी एशिया, यूरोप तक के आर्थिक गलियारे का ऐलान हुआ। और उसके तहत हम समझते हैं कि मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज़ अपने नागरिकों के लिए बेहतर तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं ताकि उनकी विकास और जल्दी हो जाएगा। और हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं जो अच्छी गुणवत्ता है, जो सस्टेनेबल है, जो रेजिलिएंट है, और हम उनको वैसे अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जिस तरह से लगातार चीन की विस्तारवादी नीति हो या आतंकवाद की बात हो, G20 समिट में कई ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को भी एड्रेस किया गया है। लगातार अमेरिका ने भी आतंकवाद और विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया है, और कल का जो स्टेटमेंट आया, जो नई दिल्ली से जो घोषणा पत्र आया, उसमें भी साफ तौर पर दिखता है। इस मसले पर आपका क्या रुख है? बुनियादी तौर पर G20 एक आर्थिक फोरम है और हम आर्थिक पहलू देख रहे हैं। अगर हम आतंकवादी के बारे में बात करें तो हम वो मालियाती वसाइल ख़त्म करना चाहते हैं, और इन काम करने के लिए हम इंडिया से रब्ता रखते हैं। ये थी हमारे साथ
अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियोड, जिनका साफ तौर पर मानना है कि G20 समिट से जो घोषणा पत्र से जो निकला है उस मैसेज के मायने खासे इम्पोर्टेंट माने जा सकते हैं और ख़ासकर भारत और अमेरिका की दोस्ती खासी अहम मानी जा सकती है। उनका कहना है कि कई सारे मसलों पे एक संयुक्त तौर पे भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग चल रहा है और न सिर्फ सरफेस बल्कि स्पेस तक कई सारी पॉलिसीज़ पे भी काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत और अमेरिका की दोस्ती G20 के बाद खासी मजबूत हुई है। कैमरामैन पंकज सूद के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी। Okay, so there it is. You heard the spokesperson of United States State Department expressing her views on how successful the G20 has been in conversation with our colleague at Bharat Mandapam, the venue. Let me, bring back Mr. Chaturvedi here. Mr. Chaturvedi, when we're talking about the key tangible outcomes, and one of them is mentioned by the US spokesperson there, is the India, Middle East, Europe mega corridor. Again, focus seemingly on infrastructure as well. And infrastructure seemingly has always been a key element when we are talking about economic development. And then the question of ensuring that this development is sustainable. Absolutely right. This has to be participative, it has to be sustainable, and it also has to be cost effective. If infrastructure development facilitates the linkages, as we have been talking of North-South corridor, we have been talking about our connectivity for energy with Central Asia and then finally with Europe, that has largely been paved way in terms of how we go forward. Unfortunately, the infrastructure initiatives of some countries which have indebted many countries in parts of Asia and Africa, we need to see how we create alternative to that structure. India's partnership with Central Asia, India's partnership with Europe is going to be 40% cost effective with this corridor. And this corridor is going to be extremely important in terms of how geopolitics emerges in the region, but also strategic dimensions of it. And from both perspectives, I think what we have insulated yesterday is our access to market and our trade assurance that was needed with this corridor. So I think the spokesperson from the US administration was absolutely right. This has given energy security, this has given trade security, and this has also assured market access not only to India, but to all the countries who are going to be part of this corridor. सचिन जी, एक और सुझाव है जो इससे पहले G20 समिट के दौरान नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने आखिर में सुझाव दिया है कि नवंबर के अंत तक हमारे पास अध्यक्षता है और एक बार वर्चुअली उन्होंने सबसे अपील की है कि वर्चुअली एक बार फिर मिलिए और जो हम यहाँ वादे कर रहे हैं, सहमति जता रहे हैं, उनकी प्रगति कैसी है, इस पर एक बार बात हो। तो इस एनालिसिस की जरूरत काफी ज्यादा। बिल्कुल प्रीति जी, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने लगातार भारत में भी एक ऐसा उपक्रम बनाया है कि हम सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते रहें। आपको ख्याल में होगा प्रधानमंत्री ने 2014 से एक नया कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था प्रगति, और उस प्रगति के अंदर एक थ्रेशहोल्ड के ऊपर के सारे प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री के स्तर पर और बाकी संबंधित कैबिनेट मिनिस्टर्स के स्तर पर रिव्यू होते रहे हैं। अब पीछे राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार के स्वयं के विभागों को अपनी योजनाओं को थर्ड पार्टी से रिव्यू करने का भी एक प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट इवैल्यूएशन है, ये प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं। पीछे कई कार्यक्रमों में जहां उन्होंने आधारशिला रखी, उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन भी मैं करूंगा। तो ये जो कार्य संस्कृति है जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में वो लेकर के आए हैं, उसी को वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कह रहे हैं। वही अपनी अध्यक्षता में वो कह रहे हैं कि मैं उन कार्यक्रमों को जिनको हम यहाँ शुरू कर रहे हैं उनको हम रिव्यू भी करेंगे। तो ये अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण कार्य संस्कृति का परिचायक है। मुझे लगता है कि जो बार बार कहा जा रहा था कि भारत की प्रेसिडेंसी निर्णयात्मक है, कार्योन्मुखी है, ये उसी का एक उदाहरण अभी हमें फिर देखने को मिला है। Indeed, we are setting standards and applying those standards
at the global stage as well, clearly ensuring that all members, all stakeholders walk the talk also. Mr. Kuznetsov, now that you're back with us, these two aspects, when we're talking about the key tangible outcomes and the way forward as well in terms of investment in infra projects, ensuring sustainable development, and of course, the challenges to the energy security and the solutions which are being brought about, which are being thought about, but which require allocation of adequate resources as well. Oh, well, when we talk about a new transport mega corridor, the parallels with the Belt and Road initiative by China is obvious because we need to use Chinese experience in this field. China provides high level of investment in region. China provides transfer of technology to region, and it gave multiplicational effect to the economy of region. We can see that the corridor is have a large scale, and it can link Europe and India with new road through Middle East, and it can help to give new opportunity for growth, for economic growth in the region. But we need to know what kind of model will be. Okay, indeed, that is an important aspect there, Mr. Kuznetsov, that we all of us would need to know as to what kind of model would be adopted to ensure sustainable development there as well. Mr. Chaturvedi, to sum it up, since you've been keeping a very close watch, not only at this G20 summit, but previous ones as well, and other, global multilateral forums also, what would you summarize as the key tangible takeaways? We've been talking about, of course, the inclusion of African Union, one aspect, ensuring that there is a consensus on the outcome document, that is the leaders document declaration there, which has come in, the mega corridor, which we are talking about, various other aspects, vis-a-vis economy, financial security issues, cryptocurrency as well, and terrorism and dealing with money laundering issues also. So all aspects which have been delved into. But what would you summarize as the key 4 or 5 takeaways from this G20 summit under India's presidency? Thank you. Thanks, Vishalji. I think if we look at 2 tracks that are very important and are the crucial component of any G20 presidency, one is, of course, the Sherpa track, where you bring in development-related issues, but the crux lies in the finance track, which brings in key issues with which the G20 actually began with. Sherpa track was added later. So finance track has delivered 4 different items, which I think are extremely important. The first and foremost is a common framework of debt treatment. All the 3 countries, Zambia, Ghana, and Ethiopia, we could bring in. India's presidency has ensured that Sri Lanka, which is not part of this common framework of debt treatment, is also getting due attention and is part of that. The second important outcome of the finance track is the focus on the multilateral development banks, recapitalization of MDBs. The independent working group has suggested, and we are going to take that forward. The third important dimension is a cryptocurrency framework. And fourth, which I think is absolutely important, is the cross-border digital payment architecture, which has reduced. So these are the 4 major items which are there in the finance track, Vishalji. But in the Sherpa track, we have really raised the bar. We have gotten around 59 different recommendations, which are absolutely important in all the 83 paragraphs that have appeared in this 42-page document. And it's very difficult to list them, but the first and foremost is to revive the World Trade Organization.
revival of WTO with sort of operationalization of DSP, the dispute settlement mechanism from 2024, I think is absolutely important framework that has come in. And second, I think if you look at the cities that we could bring in, it's another major achievement for us. If you see the MSME framework that has come up on Jaipur, so Jaipur MSME framework, Chennai's high-level principles for blue economy, Goa's roadmap for tourism for SDGs, and Gandhinagar's sort of implementation roadmap for G20 global land initiative, I think is absolutely important. We have also succeeded in adding a new working group for women empowerment. So that way, Vishalji, a whole spectrum has been covered, which I think, in my view, strengthens some areas apart from the one that you listed in terms of counterterrorism and making the presidency more inclusive. Okay. बिल्कुल. और आशीष खन्ना जी, आखिर में आपसे भी आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स और हम देखें तो जो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी वो 4 मीटिंग रही हैं इस पूरे साल भर के दौरान, और उसमें किस तरह का मंथन हुआ है, उसके बाद क्या नतीजे रहे, वो सब हम देख रहे हैं. आपकी नज़र में क्या बड़ी बातें रही और आगे क्या वे फॉरवर्ड क्या दिख रहा है आपको? आई थिंक मेरे हिसाब से काफी टेंजिबल टारगेट रखे गए. दे आर नॉट ओनली वर्ड्स. 43% greenhouse gas emission reduction by 2030. It's a target. It's a number target. 3 times renewable energy capacity by 2030 is also a clear target which has been given across. उसके बाद futuristic technologies जो 2030 के बाद आने वाले हैं, like hydrogen, deployment of biofuels to a different level, उसके ऊपर भी क्लियर कट काम हुआ है. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया हैज टेकन द लीड along with ISA for green hydrogen innovation center which will be steered by ISA. So while clear cut target, उसके साथ फ्यूचर में जो चीजें आने वाली हैं स्पेशली एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, और स्पेस में हमारा लोहा सब मानते हैं. आशीष खन्ना जी, आपको लग रहा है जो प्रस्ताव, बस एक छोटा सा रिमार्क, माफ कीजिएगा आशीष जी आपको रोका बीच में, स्पेस में हमारा लोहा दुनिया मानती है. जिस G20 सैटेलाइट मिशन की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई, खासतौर से क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को लेकर नजर रखने के लिए, आपको लग रहा है कि जल्दी वो भी सच होता देखेंगे? Sorry, I missed your question. आशीष जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जाहिर तौर पर सहयोग का हाथ भी भारत आगे बढ़ाता रहा है, एक नई दिशा तो हर क्षेत्र में दिखाई रहा है. प्रधानमंत्री ने G20 सैटेलाइट मिशन की बात कही थी जो कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के एक तरह से उस क्षेत्र में हमारी मदद करेगी. तो आपको लग रहा है कि ये भी हम जल्दी साकार होता देख सकते हैं? बिल्कुल. आई थिंक जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, जिस हिसाब से लीडरशिप ली गई है और जिस हिसाब से कॉन्शियसनेस और सीरियसनेस है, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट. जी, so there it is. Thank you so much, Mr. Ashish Khanna, Mr. Sachin Chaturvedi, and Mr. Kuznetsov as well for sharing your views and insight with us and our viewers. We'll take a short break here, but do stay tuned into Sansad Television for the continuous coverage of the G20 Leaders Summit.